Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are continuing chapter number 22, the title of which is Business Finance. Here is the summary of the previous lesson. We were talking about the sources of finance. Uh, we talk about that there are two main sources of finance, internal and external. Internal sources of finance are those which a business fulfill from within the business, and external sources are the sources of finance which a business uh, arrange the finances from outside the business. In the previous lesson, we talked about the internal sources of finance, including retained earning, sales of assets, sale of inventories, and the owner's saving. Retained earning are the part of profit which is retained by the business by itself after distributing the profit among the different shareholders. Sale of assets, by sale of assets we mean the extra assets which are not in use. The business may sell them to meet its financial needs. Similarly, the sale of inventories were another source of finance. By selling inventories, finished goods, and other extra inventories, a business may arrange its finance by internal sources. And similarly, the owners saving, the owners may invest from their savings as well. Today we will talk about the external sources of finance. The external sources of finance are obtained from outside the business. Uh, the very first source of finance is that of issuing shares. This facility is only with the public limited companies, that the public limited companies may issue shares in order to arrange finance from its shareholders. एक कंपनी के पास की चॉइस मौजूद होती है कि वो अपने शेयर जो है वो फ्लोट कर सके, वो मार्केट में फ्लोट करके शेयर होल्डर्स अपने नए बना सकती है और अपने फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल कर सकती है. Advantages of arranging finance through shares is the very first one is that it is a permanent source of capital. No need to repay the money to the shareholders. सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है और ये शेयर होल्डर्स को आमतौर पे कंपनी की लाइफ के अंदर पे बैक नहीं किया जाता. Similarly, another advantage of shares is that of the company has no need to pay interest on the shares. कंपनी को किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता अपने शेयर होल्डर्स को. But there are some disadvantages of the shares too. And the very first is that the dividends have to be paid to the shareholders. जो लोग शेयर होल्डर्स बनते हैं कंपनी के, उनको कंपनी को हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे डिविडेंड्स जो है वो अनाउंस करना पड़ते हैं और डिविडेंड उनको पे करना पड़ते हैं. डिविडेंड आर दैट पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट विच इज़ डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स. Similarly, if many shares are bought by some particular party, the ownership of the business will change. अगर कोई पार्टी किसी भी कंपनी के शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा परचेज कर लेती है तो उस सूरत में एक और डिसएडवांटेज है कि कंपनी के जो ओनरशिप है वो भी हाथ से निकल सकती है और किसी दूसरी पार्टी को शिफ्ट हो सकती है. Similarly, by getting bank loans is another source of external finance. बैंकों के अंदर से भी कर्जे कंपनी के पास एक चॉइस मौजूद होती है. छोटे बिजनेसेस भी ले सकते हैं कि बैंकों से कर्जे लिए जा सकते हैं. बैंक लोन के एडवांटेजेस क्या है? द वेरी फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ क्विक टू अरेंज अ लोन. बड़ी आसानी के साथ थोड़े टाइम पीरियड के अंदर ही यूजुअली ये लोन अरेंज हो सकता है. Another benefit of a bank loan is that it can be for varying lengths of time. शॉर्ट टाइम के लिए भी मिल सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी मिल सकता है. ये भी एक तरह से एक फैसिलिटी है बैंक लोन्स की. Another advantage of the bank loans is that
the large companies can get a very low rate of interest on their loans कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास या चूँकि वो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की वजह से आम तौर पे एक स्ट्रांगर पोजीशन में होती हैं, तो जो बैंक्स हैं वो उनको एक चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स जो हैं वो एडवांस करने को तैयार हो जाते हैं. But at the same time, there are some disadvantages of bank loan. The very first of which is they need to pay interest on the loans periodically. जो बैंक loans हैं उन पे time to time interest pay करना पड़ता है, एक disadvantage है. In addition to this, it has to be repaid after a specific length of time. जाहिर है एक खास टाइम पीरियड के बाद इनको पे बैक करना पड़ता है. और similarly there is need to give the bank a collateral or a security. बैंक जो है वो डिमांड कर सकता है कि कोई collateral, कोई security, कोई mortgage जो है वो अपने पास कोई चीज़ गिरवी रख के ये लोन्स बिलामूम बैंक्स जो है वो एडवांस करते हैं. Debt factoring is another source of external finance. A debtor is the person who owes the business money for the goods they have bought from the business. Debt factors are the specialist agents and they buy claims of a business for immediate cash. Then these debt factors collect all the business debts from the debtors. Debt factoring क्या है? कुछ लोगों ने किसी भी बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे परचेजिंग की होती है और उन्होंने बिज़नेस को पे बैक करना होता है. अगर उस बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो फौरी तौर पे ज़ाहिर है डेटर्स से कलेक्शन इतना आसान नहीं होती. तो ऐसे में कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको हम डेट फैक्टर्स कहते हैं. डेट फैक्टर्स क्या करते हैं कि वो जो क्लेम्स हैं उस बिज़नेस के अपने डेटर्स के ऊपर, वो क्लेम्स उससे बाय कर लेते हैं और बैंक बिज़नेस को वो जो उसकी अमाउंट है वो एडवांस कर देते हैं. लेकिन इसके अगेंस्ट वो अपनी एक परसेंटेज उसमें से ले लेते हैं और उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ डेट है वो जो डेट फैक्टर्स हैं वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है. फॉर सपोज किसी बिज़नेस ने $10,000 के जो डेटर्स हैं उसके पास मौजूद हैं, लोगों ने उसके $10,000 जो है वो पे करने हैं, तो कोई डेट फैक्टर उस बिज़नेस से वो क्लेम फॉर सपोज 10% पे परचेज़ कर लेता है. तो इसका मतलब ये है कि वो 10% रिड्यूस करके यानी $9,000 जो है वो बैंक जो बिज़नेस है उसको फौरी तौर पे वो एडवांस कर देगा और उसके बाद जो डेटर्स हैं उनसे पर्सनली खुद कलेक्शन ले लेगा $10,000 की. डेट फैक्टरिंग के एडवांटेज बिजनेस को क्या हो सकते हैं? द इमीडिएट कैश इज़ अवेलेबल टू द बिजनेस. बिजनेस को फ़ौरन कैश जो है वो मिल सकती है आसानी के साथ डेट फैक्टर से. और इसके अलावा जो एडवांटेज है बिजनेस डज नॉट हैव टू हैंडल द डेट कलेक्शन इशू. इसी तरह से वो अब डेट कलेक्शन का जो हेडेक है वो ट्रांसफ़र हो जाता है डेट फैक्टर्स के ऊपर. वो बिज़नेस ने आप कलेक्ट नहीं करने, वो आप जिम्मेदारी डेट फैक्टर्स की है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि डेट फैक्टर विल गेट अ परसेंटेज ऑफ द डेट्स कलेक्टेड एज अ रिवार्ड. जो डेट फैक्टर एडवांस करता है पहले जो आपको अमाउंट, तो उसके अगेंस्ट वो एक ख़ास परसेंटेज, जैसे अभी हमने एग्जांपल में बात की कि वो कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, कोई भी हो सकती है, वो अमाउंट अब वो अपने पास रख लेता है. Thus the business does not get the full amount of their debts. Similarly, other sources of finance may include the grants and the subsidies. Government agencies and other external sources can give the business grants or subsidies. Grants basically free of any sort of interest होती हैं, ये बड़ा एडवांटेज है. इसके अलावा ये दे डू नॉट हैव टू बी रीपेड. जाहिर है ये रीपे ही नहीं करना होती, वापस नहीं करना होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि देयर आर यूजुअली सर्टेन कंडीशंस टू फुलफिल टू गेट अ ग्रांट. फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट में आस्क टू लोकेट द बिजनेस इन अ पार्टिकुलर अंडर डेवलप्ड एरिया. आम तौर पे गवर्नमेंट ये ग्रांट्स देने का पर्पज़ ये होता है कि वो
कोई साथ में इस तरह की कंडीशन लगा सकती है, फॉर सपोज किसी अंडर डेवलप्ड एरिया को गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, तो ऐसी ग्रांट सिर्फ उन बिजनेसेस को वो मिल सकती हैं जो सिर्फ उस अंडर डेवलप्ड एरिया के अंदर जाकर ही अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें. Here is summary of the discussion for today. We talk about the external sources of finance. Uh, these external sources of finance may include the issue of shares, the bank loans, debentures and the debt factoring, and the grants and subsidies.